Okay, hello everyone. In this video, we will be talking about the errors that don't affect the trial balance. So accounting में एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम trial balance. So what the students do is that in grade 9, so very beginning of grade 9, उनको double entry सिखाई जाती है, and in double entry they start to make T accounts. तो T accounts के अंदर they put all the transactions into T accounts, and then what they do is that they move on to making the trial balance. तो basically they balance the T accounts, and then जो balances होते हैं उसको वो जो है वो trial balance में ले जाते हैं, और trial balance में वो डेबिट पे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, और फिर टोटल्स करते हैं, और फिर उसको बैलेंस करते हैं. तो हम जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ द ट्रायल बैलेंस टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. हम ये दो चीज़ों के लिए ट्रायल बैलेंस को यूज़ करते हैं, एंड इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ सुपर इम्पॉर्टेंट tool to basically produce your income statements and statements of financial position. One more thing very important about trial balance is that trial balance also proves the arithmetical accuracy of the double entry. तो अगर मैंने जो है वो कोई एरर कर दिया है, ठीक है, या मैंने कोई एडिंग की मिस्टेक कर दी है कोई अकाउंट के अंदर, तो मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरह अगर स्टूडेंट्स ने कोई एरर कर दिया है, कोई गलती कर दी है, तो ट्रायल बैलेंस जो है ना एंड में डेबिट विल हैव अ डिफरेंट टोटल एंड क्रेडिट विल हैव अ डिफरेंट टोटल. सही है. लेकिन कभी कभी ये होता है कि ट्रायल बैलेंस हो जाता है और फिर भी उसमें एरर्स होते हैं, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर नॉट ट्रेसेबल from looking at the trial balance itself, because if the accountant is not very they are not aware about the mistakes that they have made, and then they might have made these mistakes जिसकी वजह से trial balance जो है have made some mistakes and trial balance हो गया, लेकिन फिर भी कुछ errors हैं, ठीक है. So what are errors? Like we all know, errors is it's basically the word tells us कि making mistakes, ठीक है. So accountants, because they are also human beings, and human beings make mistakes, so we should know that accountants are no different. So they are very humanly weak, they do make mistakes, and उनके जो mistakes होते हैं वो कभी कभी जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते. दोनों ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट टोटल्स सेम हो जाते हैं, एंड आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें एरर्स होते हैं. एंड देन देर आर एरर्स दैट डू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. सो द स्टूडेंट्स नो दिस कि एक टॉपिक होता है एरर्स इन सस्पेंस, और सस्पेंस वाला जो चीज़ आती है ना वो उसमें आती है जब वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं. आपका ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा, टोटल्स इक्वल नहीं हो रहे, तो जो एरर्स जो बेसिकली उसमें वो एरर्स हैं जिसको अब सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत है, बिकॉज यू जस्ट पुट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस in the suspense account and then try to find out the errors. But for now we'll not do that. We'll just, for this video, we'll stay to the errors that don't affect the balancing of the trial balance, ठीक है. अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग में. स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 5 इम्पॉर्टेंट क्लासेस. सो दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टी अकाउंट्स, ठीक है. तो इसी तरह एक एसेट्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है. एसेट्स के अंदर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है. देन वी हैव motor vehicles, then we have fixtures, then we have premises, then we have buildings, we have bank, we have cash, ठीक है, we have inventories. So assets is a broad category जिसका जो है वो general rule है. The nature of the asset is that whenever you have to increase an effect in the account of an asset, you debit that account, ठीक है. Whenever you have to decrease the effect in that account of an asset, so you credit that account, ठीक है. So whenever you have to increase the asset, debit the account, decrease the asset, credit the account, ठीक है. तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ so that it will help you understand the errors very nicely. सही है. अगर आपको एक इफेक्ट शो करना है एसेट के अकाउंट में, उस एसेट को डेबिट कर दो. अगर आपको एक इफेक्ट निकालना है एसेट के अकाउंट से, रिमूव करना है, तो उस एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दो. सेम गोज फॉर ऑल दीज ब्रॉड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. इज अ ब्रॉड टाइप. ट्रेड पेबल्स इज अ लाइबिलिटी. फिर बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी. लोन फ्रॉम XYZ ABC
जॉर्ज और स्मिथ और whoever, उनसे जो लोन ले रहे हैं वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है. लोन फ्रॉम, बेसिकली लोन फ्रॉम समवन. And then you have bank overdraft. So when the bank allows you to overdraw your account, that is also a liability, ठीक है. कैपिटल क्या है? कैपिटल ओनर्स जो अपने पैसे लगाते हैं, तो लाइबिलिटी और कैपिटल जो है उनका नेचर सिमिलर है. Basically capital also increases on the credit side, liabilities also increase on the credit side. So if you want to show an effect in the capital account or in the liability account, you credit that account. If you want to remove the effect, decrease it, so you debit the liability account or the credit account or the capital account, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं इनकम्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकम्स एंड एक्सपेंस विल एक्चुअली affect your profit, ठीक है. Incomes and expenses. So revenue, basically sales, is an income account, ठीक है. Incomes increase on the credit side, decrease on the debit side, ठीक है. इसी तरह expenses में purchases and all other expenses, rent payable, wages and salaries, insurance. Then we have carriage outwards, we have carriage inwards, we have discount allowed, we have इनकम्स. तो इनकम्स में क्या होता है? इनकम्स के अकाउंट में वी हैव रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीव, ऑल दीज आर इनकम्स. सो इनकम्स इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड. एक्सपेंसेस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको एक इनकम के अकाउंट में एक इफेक्ट शो करना है, credit that account. If you want to remove the effect from the income account, you debit that account, ठीक है. इसी तरह अगर आपको एक एक्सपेंस के अकाउंट में इफेक्ट शो करना है तो आप डेबिट करेंगे उस अकाउंट को. इसी तरह अगर आपको कोई इफेक्ट रिमूव करना है एक्सपेंस के अकाउंट में से तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है. And then okay, so now moving on to the types of errors. So this was the classes of accounts. That is very important. Classes of T accounts. So these are broad types और इसके अंडर जो है वो बहुत टाइप के T accounts आते हैं. इसी तरह मतलब बहुत सारे इसके अंदर T accounts आते हैं. So ये क्लास है और उसके T accounts उसके अंडर आते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट कौन सा अकाउंट एसेट का है, लाइबिलिटी का है, एक्सपेंस का है, इनकम का है, ड्राइंग्स एंड कैपिटल, ठीक है. Okay, so moving on to these errors, the types of these errors. तो जो नहीं अफेक्ट करते ट्रायल बैलेंस को, सबसे पहले omission, very easy. You completely the accountant forgets a transaction. Forgetting a transaction means ना डेबिट पे रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया, ठीक है. So an example of that would be a motor vehicle for $20,000 was bought paying by check, and now this was forgotten, ठीक है. तो आपने ये ट्रांजैक्शन है और द अकाउंट एंड नो रिकॉर्ड्स वर मेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन. ऐसे लिखा होता है यूजुअली in the questions, या this transaction was not recorded या no records were made for this. तो आप उसको करेक्ट किस तरह करते हैं? तो इसको करेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, इसको रिकॉर्ड कर लो, बस आसान. सिंपली रिकॉर्ड इट, लाइक यू रिकॉर्ड the debit side of that account and you record the credit side. So whenever you will buy the motor vehicle, debit what comes in is the rule. Motor vehicle is coming in the business, you write that on the debit side. Then you are paying by check, so you write bank on the credit side, and now money is going out of the business. So debit what comes in, credit what goes out. That is it. That is how you correct it. The second type of the error, that's called original entry, writing the wrong amount on both the sides, ठीक है. तो आपने डेबिट पे भी गलत अमाउंट लिखी, आपने क्रेडिट पे भी वही गलत अमाउंट लिखी. तो अगर आपने डेबिट पे 10 रिकॉर्ड किया तो आपने क्रेडिट पे भी 10 रिकॉर्ड किया, ठीक है. इसी तरह अगर आपने डेबिट पे 96 रिकॉर्ड किया तो आपने क्रेडिट पे भी 96 रिकॉर्ड किया, और दोनों अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से गलत हैं, सही है, अलग है बेसिकली. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस, द एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज बेसिकली दैट rent paid by check $100 and wrongly recorded as $10. So what you do is that you debit the rent account, you record $10 in the rent account, and you recorded as an accountant you also recorded $10 in the bank account. तो आपने डेबिट को रेंट को डेबिट किया by $10, बैंक को क्रेडिट किया by $10. So ये गलत किया, हमने $100 पे किया था और हमने उसको बेसिकली वी अंडरस्टेटेड व्हाट वी पेड. सो दोनों अकाउंट गलत हैं, 90 से अंडरस्टेटेड है दोनों अकाउंट. रेंट भी 90 से अंडरस्टेटेड है, बैंक भी 90 से अंडरस्टेटेड है. तो आपको क्या करना चाहिए?
इनको करना ये चाहिए था बेसिकली, इनको रेंट डेबिट करना चाहिए था $100 से और बैंक क्रेडिट करना चाहिए था $100 से. सो हाउ विल दे करेक्ट इट? सो they'll basically, this error is an understatement of the actual amount. So now you have to, what you do is that you take out the difference. तो कितने से understated है? 90 से understated है. तो आप 90 जो है वो रेंट में रिकॉर्ड कर देंगे. you'll debit rent by 90 and you'll credit bank by 90. एंड दैट इज़ हाउ द एरर विल बी करेक्टेड. आप सही अमाउंट पे पहुंच जाएंगे. इसी तरह अगर एक ओवर स्टेटमेंट होती है कोई टी अकाउंट के अंदर, सो लेट्स से रेंट पेड $100 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $1000 इन द रेंट अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट. सही है. तो अगर आपने $100 पे किया और आपने 1000 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज़ एन ओवर स्टेटमेंट. आपने 100 पे किया था और आपने 1000 नहीं पे किया था. सही है. सो आप अब उस एंट्री को रिवर्स करेंगे. सो यू विल रिमूव द effect of 900 from the rent account. Rent is an expense. To remove the effect in the expense account, you credit that expense account. ठीक है. So you credit the rent account and you debit the rent bank account by $900. So reverse the entry to correct it by the difference. So एग्ज़ाम्स में ऐसे ही तकरीबन होते हैं, लेकिन अमाउंट्स बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंस ही होती हैं, लाइक 96, 63 and 56, etc, etc. So the concept basically is the same. ठीक है. Okay, so if there's this next error, it's called error of principle. ठीक है. Error of principle is when the wrong T account is being debited and credited and the wrong class. That is very important. मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे शुरू में पढ़ाया था classes of T accounts. So assets, liabilities, capital incomes and expenses. These are the broad classes of T accounts. Now what they are saying कि error of principle में हमने T account तो गलत है लेकिन उसकी क्लास भी गलत है. जैसे asset को expenses में डाल दिया. ठीक है. तो ये जो है ना, मतलब आप, this is like a major error. This will change your financial statements very significantly. बिकॉज इट्स लाइक अगर आप एसेट को इमेजिन एक मोटर व्हीकल ख़रीद रहे हैं और आप उसको रिपेयर्स के अकाउंट में डाल रहे हैं. ठीक है. तो मोटर व्हीकल, बिकॉज इट्स अ नॉन करंट एसेट, यू नीड टू रिकॉर्ड दैट इन द मोटर व्हीकल अकाउंट. और आप उसको मोटर व्हीकल रिपेयर्स के अकाउंट में अगर डाल देंगे तो इसका मतलब आपका एक्सपेंसेस ओवर स्टेट हो गए और आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया. ठीक है. सिमिलरली अब आपके एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स अंडर स्टेट हो गए. एसेट को जो है वो एक्सपेंस में डाल दिया था. इधर मैंने एग्जांपल डाला है कि आपने रिपेयर्स जो था उसको आपने एसेट के अकाउंट में डाल दिया, मोटर व्हीकल के अकाउंट में. तो repairs of $2,500 was put into the motor vehicle account. Basically, they should have done this, that they should have done motor vehicle repairs debit and bank credit. ठीक है. बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट. ठीक है. नाउ इन्होंने बेसिकली बैंक तो सही जगह पे लिखा है, बैंक को क्रेडिट किया है दोनों केस में. बेसिकली जो आपको करना चाहिए था एंड जो आपने किया, दोनों केस में बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इट्स फाइन. बैंक को कुछ नहीं करना, आपने को इसको मोटर व्हीकल के अकाउंट से निकालना है और रिपेयर्स के अकाउंट में डालना है. तो आप करेंगे रिमूव from the asset account and put it in the expense account. So how you correct it? You debit the motor vehicle repairs by $2,500 and you credit motor vehicle by $2,500. ठीक है. This is how you correct this transaction जो आपने wrongly record की है. So you remove it from the motor vehicles account because this was your expense, not your asset. You remove it from the motor vehicles account. You credit the motor vehicles account because assets जो है उसमें effect remove करने के लिए you credit the account. ठीक है. इसी तरह अगर आपको कोई effect एक्सपेंस में डालना है तो बेसिकली आपको एक्सपेंस में उसको डालना है, तो यू डेबिट द एक्सपेंस अकाउंट. ठीक है. नोटिस हियर कि इस एरर से जो है वो ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पे बढ़ते हैं, एसेट्स भी डेबिट साइड पे बढ़ते हैं. तो अगर आप कोई एक्सपेंस को अगर एसेट अकाउंट में डाल देते हैं तो ट्रायल बैलेंस को क्या फ़र्क पड़ना है? एसेट्स जो हैं वो भी दोज आर ऑल्सो रिटन ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिटन ऑन द डेबिट साइड. सो व्हाट यू डिड इज़ कि आपने एक्सपेंस को एसेट में डाल दिया,
So the final value of the trial balance will still balance. Okay, so the point of the whole thing is that the trial balance will not be affected by this. Next error, in the error of commission, you know what you do is that accountant जो है वो गलती से कोई wrong account को debit या credit कर रहा है, but the class is the same. सही है, class नहीं change हो रही इसमें. The example of that would be sold goods 5400 to Adil, रिकॉर्डेड इन आदिल्स अकाउंट. ठीक है, सो अदील वॉज आवर कस्टमर जिसको हमने सेल्स की थी. हमने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने आदिल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया. तो हमने बेसिकली ये किया, आदिल डेबिट सेल्स क्रेडिट, हमें करना चाहिए था अदील डेबिट सेल्स क्रेडिट. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आदिल के अकाउंट से निकालेंगे, 5400 से आदिल को क्रेडिट करेंगे और अदील को डेबिट करेंगे, जो कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल है जिसको हमने बेचा है, जिसको हमने सेल्स की है. नोटिस हियर दैट बोथ आदिल एंड अदील आर योर ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, लेकिन एट दिस पॉइंट यू हैड मेड द सेल्स टू अदील नॉट टू आदिल. ठीक है, बट नाम सेम होने की वजह से अकाउंटेंट कन्फ्यूज़ हो गया, इसलिए उसने गलती से आदिल के अकाउंट में डाल दिया. Okay, in the next error, what you do is that what you should have debited, you credit that, and what you should have credited, you debit that. ठीक है, तो इसको कहते हैं reversal. ठीक है, what is the example for this? Discount received from AB stores of $120 was debited to the discount received account and credited to the AB stores account. So गलत एंट्री, ऑपोजिट है. डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड इट्स ऑलवेज क्रेडिटेड, एंड ए बी स्टोर्स इज़ योर ट्रेड पेबल जिससे हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो हमने ए बी स्टोर्स को डेबिट करना चाहिए था. तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली दे शुड हैव डन दिस, ए बी स्टोर्स डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, बट दे डिड डिस्काउंट रिसीव डेबिट ए बी स्टोर्स क्रेडिट. एंड नाउ टू करेक्ट इट, very important, double the amounts and make the correct journal entry to correct it. ठीक है, so you do AB stores debit discount receive credit. तो अब आपको जो है वो यहाँ पे I'll just demonstrate a bit. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में I'll write DR for discount receive, इन्होंने इसको बेसिकली 120 डेबिट पे रिकॉर्ड किया था, और AB स्टोर्स के अकाउंट में इन्होंने 120 क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया था. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB स्टोर्स. Okay, so what they'll to correct it, why did we double the amount? So एक दफ़ा इन्होंने, बिकॉज उन्होंने गलत साइड पर रिकॉर्ड किया है, तो उसका एक दफ़ा तो आप नलिफाई करने के लिए, द इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, बिकॉज डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट जो है ना, वो बेसिकली आपने जिस साइड पर रिकॉर्ड किया उसके ऑपोजिट साइड पर आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो दिस इज़ लाइक दोनों कैंसिल, they'll cancel off with each other. ठीक है, and then you actually record discount receive. ठीक है, सिमिलरली ए बी स्टोर्स के अकाउंट में भी आपने इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया और फिर आपने इसको डबल अमाउंट करनी है और डबल अमाउंट से डेबिट पे रिकॉर्ड करना है. तो आप जो है वो बेसिकली दोनों साइड को basically to nullify the effect of the error that you wrongly recorded on the credit side, now you record that on the debit side, and you also record 120 more on the debit side, because now you actually have to record the entry on the debit side. ठीक है, so AB stores debit discount receive credit, and then okay, now the last error is called error of basically compensating error. So when one error cancels the other error, one error compensates for the other error, like two errors basically cancel each other out. So like discount allowed and discount received both overstated by 200. Discount allowed is a debit item in the trial balance, discount received is a credit item in the trial balance. तो दोनों को अगर आप 200 से ओवरस्टेट कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना है. तो इसको करेक्ट करने के लिए आप जो है वो डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करेंगे, बेसिकली रिमूव इट फ्रॉम द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड also credit discount allowed to remove the overstatement from the discount allowed account. Okay, another example of this would be both sales and purchases being understated by 200. So purchases is a debit item, सेल्स इज़ अ क्रेडिट आइटम, और दोनों को आप अगर अंडर रिकॉर्ड करेंगे तो आप जो है वो उससे भी ट्रायल बैलेंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा. तो आप उसको करेक्ट करने के लिए आप करेंगे परचेजेस डेबिट 200, सेल्स क्रेडिट 200. Okay, another example for the same error would be purchases being understated by 100. Purchases being understated by 100 and sales returns. Purchases is a debit item, sales returns is also a debit item. तो एक जो है वो 100 से understated है और एक 100 से overstated है. ठीक है, तो दोनों डेबिट आइटम्स हैं, एक अंडरस्टेटेड एक ओवरस्टेटेड है, तो दोनों ने एक दूसरे का बेसिकली एक अंडरस्टेटमेंट और एक ओवरस्टेटमेंट ने एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर दिया.
The errors, basically two errors are compensating for each other. So you'll do purchases returns, purchases debit $100 and sales returns credit $100. So basically sales returns is a debit item, तो वो overstated है, तो उसको कम करने के लिए आप credit side पर रिकॉर्ड करेंगे, एंड आप परचेजेस को डेबिट करेंगे बिकॉज अंडर स्टेटमेंट है, यू नीड टू इंक्रीज द परचेजेस, सो यू डेबिट द परचेजेस, बेसिकली डेबिट द परचेजेस. सो नाउ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे टीचर्स ने जिस तरह मुझे ये सिखाया था कि मुझे ये याद कैसे करना है. सो देर इज़ दिस वर्ड, इट्स कॉल्ड कॉपकोर. Okay, very famous teachers also, most teachers have been using this acronym to actually make the students remember the errors that don't affect the trial balance. So COPCOR stands for, C stands for commission, O stands for omission, P stands for principal, C stands for compensating, O stands for original entry, and R stands for reversal. So if you know this word COPCOR, you'll remember commission, omission, principal, compensating, original entry, reversal. And then of course you have to make a bit of an effort to actually remember कि ये errors क्या हैं, क्योंकि in some questions in accounting they ask you to briefly describe कि error कैसा, मतलब explain करें कि error क्या होता है, या फिर वो कहते हैं state two errors that don't affect the trial balance. तो for 2 marks you just write commission, omission, or principal and omission, or original entry and omission. That will actually give you the marks. So I hope this helps you guys, and thank you for listening.